Hi guys, a very cordial welcome to everyone. So today we're gonna do a very interesting fact about an organism. But before disclosing that, let me ask you one question. And the question is, tell me an organism which could live without its head. Huh? Is it really possible? There's an organism who could live without its head? No, the answer is no, sir. No one can live without its head. You are wrong. Yep. Here you're a little bit wrong. Why I'm saying little bit? You're partial wrong. You're not fully wrong. You're not fully correct. So let me disclose this question, and the answer is yes. You're thinking correct. The answer is yes. There's an organism who could live without its head. Is this a man who could live without its head? No. A man couldn't live. Means a human being cannot live without its head. Because we have all the important organ in our head only. That is the brain, the eye, the optic nerves, isn't it? And the mandible area, all the throat area, and all the important things are we are having on our upper side, on our thoracic side only. So we could not live without the decapitation of the head. Now, let's see that who is that organism who could live being decapitated of its head. So the I hope majority of you know and minor of you don't know. If you don't know, please don't feel down. I'm gonna tell you. And the answer of this particular question is very simple. You see it again and again. But before showing you the picture, before showing you the answer of this particular question, please do not try this thing to cut that insect head because it is not humanity, isn't it? Please don't do that to examine this thing. Okay, so let's see the answer. The answer is cockroach. Yup, it's a cockroach. Now your reaction will be like this man, stunned and surprised. You seem to be amazed by seeing this answer that it's a cockroach. Seriously, yep, it's a cockroach. But the fact is that it could live just for 7 days. Yeah, it could live just for 7 days. While I'm writing years, it could live just for 7 days, means for 1 week only, being its had decapitated. Okay, so a cockroach is that organism who could live without head just for 1 week. It could survive that 7 days easily, but the condition is that it could not be crashed or crushed by anyone. Okay, it should not crash or crushed by anyone. The condition is that. So let's see what makes it living for 7 days. Let's see that reason. Let's see that biological reason that what makes it living for 1 week. How it can survive without its head, without its eyes, mouth, and whatnot. Okay, since its mouth is decapitated, okay, its mouth it's it is cut it, so obviously it cannot feed, it cannot eat, isn't it? And being hunger, being famished, it died due to starving. Okay, many cases are they die by starving, or they die by crushing or crashing of the man, of the human beings, or they became the prey of someone, isn't it? These are the conditions which do not make it living for 7 days. You know this like a planta americana, which is the common cockroach which we see in our homes. They could live just for 7 days, while rest of the means many of the varieties or many of the categories of cockroach could live for a month or for an for a month or for a year also. Okay, means
Few of the varieties of cockroach could live for a month and for a year also. Yes, they could live for a year, for an entire like 12 months. It could live. But the condition is that, as I told you, it should not be crashed or crushed by someone. मतलब किसी के पैरों से दब के कुचल ना जाए और ना ही किसी का शिकार बन जाए. मतलब मैक्सिमम केसेस में ये होता है किसी का शिकार बन जाता है और कोई इसे क्या कर लेता है, खा लेता है. Isn't it? These are the maximum cases. That's why they cannot survive for more than one like a week. Okay? पर जनरली जो कॉकरोचेस जो हमारे कॉकरोचेस होते हैं, हमारे कॉकरोचेस का मतलब है जो इंडिया में कॉकरोचेस पाए जाते हैं, दैट इज द लाइक प्लेसेंटा अमेरिकाना, द नेम ऑफ द कॉकरोच वेराइटी विच इज फाउंड इन आवर इंडिया. Okay, more specifically, so that placenta, sorry, not placenta, that is Periplaneta americana. This is the variety, sorry, Periplaneta americana. This is the variety of cockroach which lives in India, which exists in India, and this could live just for 7 days, just for 1 week, and rest of the varieties, okay, who are red green in color, they are very few, okay, they could live just for 1 week and 1 year. Yeah, but they cannot, unfortunately they cannot live because they do not have the head, since they do not have eyes, and since they do not have eyes, they could be crashed or crushed by someone, or they could be become the prey of someone, isn't it? This is the reason why they cannot survive for more than 15 days or more than 7 days. So let's find out the reason that what makes a cockroach like this. Oh my god, how happy it is, isn't it? Being captivated, it is so happy, so satisfying. So let's see how the cockroach can live being decapitated. So it depends on the nervous system of a cockroach. जो cockroaches का nervous system होता है बहुत ही ज़्यादा like advanced होता है, not advanced but the very fine type of nervous system. देखिए हमें कौन मतलब like you could say active रखता है environment में. What keeps us active in the environment? If we put something hot, we directly withdraw our hand. If we put something very cold, we directly withdraw our hand. What makes us sensible, or what makes us so active in the environment that we could recognize that this is hot, it could hurt me, this is like cold, it could hurt me. What makes us sense this? That is our brain. Yeah, very good. But generally these like cockroaches do not have that much advanced brain. They have the very small brain. You could see over there, I'll tell you there, these are what. So they have the segmented part that is known as the ganglia. You have seen the ganglia na? Ganglia is the plural word, ganglion is the singular word. So a ganglia, that is a ganglion, is nothing, just they are the aggregated pairs of nerves. Ganglia are the aggregation of the nerves, means they are the groups of nerves. Okay, so you could see over there, this is a cockroach. Okay, and these circles, these black circles, just wait. So these black structures, these black structures, these are the ganglias. They are 10 number, 10 ganglias होते हैं, 10 गैंग्लिया. ओके, 10 गैंग्लिया होते हैं. गैंग्लिया जैसे मैंने बताया प्लूरल फॉर्म है, गैंग्लियन इज द सिंगुलर फॉर्म. ठीक है, तो 10 गैंग्लिया होते हैं. नाउ एज यू ऑल नो, जो एक कॉकरोच होती है, इसकी बॉडी किस चीज़ में डिवाइड होती है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. दैट इज द हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. Okay, this part is the head region, this is thorax, and this lower part is the abdomen area, isn't it? This is the 3 part of a cockroach. Okay, जैसे फ्रॉग की बॉडी सिर्फ 2 सेगमेंट्स में होती है, हेड, ट्रंक, isn't it?
इनमें नैक नहीं होती है। इसी तरीके से कॉकरोचेस में दे हैव द 3 पार्ट थोरेसिक, एब्डोमेन एंड द वन इज अपर पार्ट, इज इट? सो इनकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंड द अपर पार्ट, this head region is has 1 ganglia, while this thoracic part has 3 ganglias, isn't it? These are the 3 ganglias, while this abdominal part has 8 ganglias, isn't it? समझेंगे ये बात को, ओके? जो हमारा हेड रीजन होता है इसमें कितने गैंग्लियाज होते हैं? 1 गैंग्लिया, isn't it? नेक्स्ट हमारा आता है थोरेसिक रीजन, जो थोरिक्स वाला पार्ट होता है, दैट हैज हाउ मच गैंग्लिया? काउंट 3 गैंग्लिया, इज इट? 3 गैंग्लिया। एंड एब्डोमेन पार्ट जो होता है, एब्डोमेन पार्ट, दैट हैज 8 गैंग्लिया, ओके? तो आप खुद ही सोचिए सबसे ज्यादा गैंग्लिया किस में है? एब्डोमेन में है, उससे कम थॉरेक्स में है, और फिर सबसे कम किस में है? हेड में है। मैंने बताया जो ये हेड वाला गैंग्लिया होता है इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन, ओके? दिस हेड गैंग्लिया इज नोन एज द सुप्रो एसोफाइजियल गैंग्लिया, सुप्रा एसोफाइजियल गैंग्लिया इसका नेम है ये, ठीक है? जो हेड रीजन होता है इसे हम क्या कहते हैं? सुप्रा एसोफाइजियल गैंग्लिया, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कॉकरोच भी कहते हैं। दिस अपर पार्ट, दिस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कॉकरोच एज वेल। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कॉकरोच, ठीक है? क्योंकि जो आइस और जो एंटीनास की नर्व्स होती हैं वो इन्हीं से मतलब इन्हीं से अटैच होती हैं, इसी से अटैच होती हैं, जो आइस आँखों की और जो एंटीना होते हैं इनके, ओके? इनकी नर्व्स जो होती है वो सुप्रो एसोफाइजियल गैंग्लिया से ही क्या होती हैं? अटैच होती हैं। नीचे आते हैं, नीचे होता है हमारा सब एसोफाइजियल गैंग्लिया। ऊपर वाला क्या था? सुप्रो एसोफाइजियल गैंग्लिया, जो कि ब्रेन था कॉकरोच का, जिससे एंटीना और आइस की नर्व्स थी वो अटैच थी, इजंट इट? नेक्स्ट था हमारा सुप्रो एसोफाइजियल गैंग्लिया। नीचे हमारे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल कनेक्शंस गैंग्लिया की। दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल कनेक्शंस, ओके? यू कुड सी विच कंसिस्ट ऑफ 9 गैंग्लिया, ओके? 8 गैंग्लिया बेसिकली, 8 गैंग्लिया। तो ये समझ आया? अब खुद ही सोचिए, ये मैं पूरा रेस कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कुड टेक, ओके? हाँ, नेक्स्ट थिंग देखिए, अब आप खुद ही सोचिए, जो गैंग्लिया है वही इसको सारे सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वही इसको एक तरह से लाइफ दे रहे हैं, ओके? इन्हीं की वजह से इसमें लाइफ है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर जो कॉकरोच है उसका हेड कट जाएगा, ठीक है? उसका हेड कट गया तो कितने गैंग्लिया चले जाएंगे? हेड में कितने गैंग्लिया है? हाउ मच? 1 गैंग्लिया है, इज इट? दैट इज द सुप्रो एसोफाइजियल गैंग्लिया, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ओके? तो इसका जो ब्रेन है वो कट के चला जाएगा, ठीक है? इसकी आंखें चली जाएंगी, आंखें और ब्रेन इसके कट के चला जाएगा। बाकी बचेगा सब एसोफाइजियल गैंग्लिया, और बाकी के कितने गैंग्लिया? 9 गैंग्लियास, ओके? बाकी के 9 गैंग्लियास अभी भी हैं, इजंट इट? 9 गैंग्लियास अभी भी हैं। बाकी के जो गैंग्लियाज हैं 8 ये हैं, और सॉरी 9, 10, 11 गैंग्लियाज अभी भी हैं। अब आप खुद ही सोचिए, 11 गैंग्लियाज अभी भी प्रेजेंट हैं, ठीक है? अभी भी प्रेजेंट है, प्लस एंटी का मतलब है प्रेजेंट, ओके? और 2 गैंग्लियाज जो हैं वो कट हो चुके हैं, वो चले गए हैं। अब जो कॉकरोच है उसकी लाइफ इन्हीं की वजह से उसकी लाइफ है। तो खुद ही सोचिए, 11 गैंग्लिया जो प्रेजेंट हैं, ओके? उनमें से अगर 2 चले गए हैं तो क्या इसकी लाइफ चली जाएगी इतनी जल्दी? आपका पूरा शरीर है, आपके हार्ट कट जाता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ओके? आपका हार्ट कट जाता है, क्या आप पूरी तरीके से मर जाएंगे?
नहीं मर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके हाथ में थोड़ी है, इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके माइंड में, आपके चेस्ट रीजन में है। ओके, अगर आपके माइंड में चोट लग जाए तो हो सकता है कि आप मतलब है ना आपकी डेथ हो जाए, क्योंकि आपके हाथ कटा है, उसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जो कि आपके माइंड में है। तो हाथ कटने से कुछ नहीं होगा, इज इट? जस्ट हाथ कट जाएगा, फिर भी आप अलाइव होंगे, फिर भी आप जिएंगे। अगर माइंड में चोट लग जाए तो आप मर सकते हैं, इज इट? तो सेम कॉकरोचेस की तरह कॉकरोच के साथ होता है। सोचिए 2 गैंग्लिया चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉकरोच को, भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ओके, मतलब भले ही फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उसकी आँखें चली गई, उसके 2 गैंग्लिया चले गए, तो वो 1 हफ्ते के लिए मर जाता है, 1 हफ्ते के बाद, इज इट? 1 हफ्ते के बाद मर जाता है, पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर भी। ओके, जो 11 गैंग्लिया प्रेजेंट है वो इन्हें न्यूरॉन, वो उसे सेंसेस देंगे, इज इट? तो यही रीज़न है, क्योंकि 11 गैंग्लियास प्रेजेंट है और 2 गैंग्लियास ही सिर्फ चले गए हैं, तो यही रीज़न है कि वो इतने दिनों तक, 1 हफ्तों तक जिंदा रहता है थ्रू दीज 11 गैंग्लियंस, इन 11 गैंग्लियंस की वजह से। ओके, ये जो 11 गैंग्लियंस हैं ये इसे जिंदा रखती हैं। ओके, अब ये मर क्यों जाता है? क्योंकि इसकी आंखें जो है वो कहाँ थी? इसके अपर पार्ट पे थी, इसके सुपर एसोफाइजियल गैंग्लियन में थी, जो कि इसका ब्रेन था, इसमें ही इसकी आंखें जो है वो अटैच थी। इसका ब्रेन जो है वो इसकी आंखों से अटैच था। अब क्योंकि इसकी आंखें चली गई है तो ये देखेगा क्या बेचारा? कुछ नहीं देख पाता है, इज़न्ट इट? दैट्स वाई इसे कुछ दिखाई नहीं देता और ये ऐसे ही बेचारा अंधा चलता रहता है, कहीं किसी से टकरा गया, कहीं किसी से पिच गया। सो मैक्सिमम रीज़न यही होते हैं कि ये 1 हफ्तों तक क्यों नहीं जी पाते, क्योंकि इनकी आंखें नहीं है, तो विदाउट आइज दे कैन नॉट सेंस, दे कैन नॉट सी व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई दे डाई जस्ट आफ्टर 1 वीक। ओके, ये काफ़ी दिन तक चले, काफ़ी दिन तक जिए, पर क्योंकि इनकी आंखें नहीं होती है इसलिए ये 1 हफ्तों के अंदर अंदर ही मर जाती हैं। Okay, so this is the reason why the cockroach live for 1 week. Okay, so the reason is because of presence of how much ganglia? 9 ganglia. Okay, 9 ganglia. 9 ही थे या 9 गैंग्लिया, 9 गैंग्लिया की वजह से ये सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, दे सर्वाइव फॉर हाउ मच डेज? 1 वीक, but due to the prey, due to become the prey of some other animals, or due to the crashing or crushing of the cockroach with some objects, they die so soon. I hope the reason is the reason is clear to you why these cockroaches like can live just for 7 days. I hope आपको ये समझ आया हो. So if you love this today's knowledge, please do tell me in the comment section. Bye guys.